Hello friends, welcome to Jajit Defense Academy. My name is Jyoti. In this video, we're going to discuss about our second chapter of biology, that is cell. Okay, so in this chapter we discuss about the cell and their definitions. Basically, what are cells? Cells are referred as building blocks of all the living organism. Means जो हमारा सेल होता है, it's a building blocks of living organism. Means building block a simple substance which are made up of and very important for our life. Okay, one cannot stress enough the importance of cell in existence and substances of life on earth. Means हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हमारी लाइफ में हमारी एग्जिस्टेंस के लिए जो सेल की इम्पोर्टेंस है कितनी ज़्यादा है. हम यहाँ जिंदा है, हमारी बॉडी बिल्ड है जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्स. ओके, टेकिंग अबाउट इट्स हिस्ट्री, a scientist named Robert Hooke introduced the term cell in 1665. The history of cells is about starting from the 1665. Who introduced this? A scientist named Robert Hooke. He introduced the term cell. Okay, and how he introduced? He do the experiment on a slice of crock under a compound microscope. Okay, under a compound microscope उसने experiment किया. He observed what is this and what was their observations. When he observed that a crock slice under microscope, he observed that blocks of honeycomb means मधुमक्खी के छत्ते की तरह उसको दिखा कि what was it. And when he observed that कि ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिख रहा है, that's like this, that a net surrounding. Okay, that's any types. Okay, उसको दिखा. And when he observed that कि it is a cell. Okay, and it lets the discovery of cells, fundamental units of life to make the life possible on earth. Cell are the things which make the life possible on earth. Okay, then what are the features of cells? Our body consists of numerous types of cells. हमारे बॉडी में बहुत टाइप्स के सेल्स हैं. ओके, एंड ईच कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल फंक्शंस ऑफ बॉडी. एंड हर एक पार्ट का सेल, हर एक सेल का अदर फंक्शंस है. डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट सेल्स विद डिफरेंट फंक्शंस. ओके, सम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल्स आर, मतलब सम प्रॉपर्टीज दैट यू माइट बी ऑब्जर्व्ड और लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर्स ऑफ द सेल. ओके, a cell is the smallest and basic unit of life. Means जो हमारा सेल है, it is a smallest but it is a basic unit of life. हमारी लाइफ स्टार्ट ही होती है सेल से. ओके, then a cell is not visible to the naked eyes because of its minute size. हम सेल्स को अपनी नेकेड आइट से नहीं देख सकते, हम अपनी आंखों से सेल्स को नहीं देख सकते बिकॉज जो उसका साइज है बहुत ही छोटा है. इतना छोटा है कि वी कैन नॉट ऑब्जर्व. ओके, वी हैव टू सी फ्रॉम विथ माइक्रोस्कोप्स. ओके, अ सेल कैन नॉट हैव शेप एंड साइज विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म. मीन्स जो हमारा सेल्स है उसका कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है, कोई डिफरेंट, मतलब एक पर्टिकुलर जो होती है ना, जस्ट वी हैव डिफरेंट सेल्स विद डिफरेंट साइज बट नॉट परफेक्ट एंड एग्जैक्ट. ओके, देन एवरी ऑर्गेनिज्म पोजेसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं. ओके, all the activities cell shows and exhibits specific functions. Their function includes respiration, reproductions,
ग्रोथ एंड मेनी मोर्स। मतलब जो हमारा सेल है, it shows the respirations, reproductions, growth, and many more functions in our body happening day by day and day to day. Okay? From cell theory, we know that every cells come from a pre-existing cells. Means what are the cell theory and how we know about कि जो सेल थ्योरी है उससे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ही होते हैं। जो हमारी सेल थ्योरी है ये बताती है कि जो हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, मतलब जो नए सेल्स आते हैं, मतलब मीन्स वी हैव अ सेल एंड इफ़ वी वांट अदर सेल, अगर हमें नया सेल चाहिए तो इस पुराने सेल से ही एक नया सेल्स बनेगा, इस पुराने से और नया 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 बनेगा। मीन्स जो हमारा नया सेल बनता है, एवरी सेल्स कम फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, अ कॉमन सेल विच प्रोड्यूस द अदर सेल्स। ओके, it means a single cell divisions furthest from new cells. Okay, new cells not only perform the same activity as for their parent cells but also carry the same genetic material। मतलब जो ये है पेरेंट सेल, ओके, इससे आए नया सेल, ये नया सेल, ये नया सेल, ये नया सेल, ये नया सेल। तो ये जो हमारे नए सेल आए हैं वो सिर्फ सेम एबिलिटी ही नहीं बल्कि सेम जेनेटिक मटेरियल भी लेके आएगा और सेम एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, बिकॉज जो उसके पेरेंट ने किया काम वही एक्टिविटी ये नए सेल्स भी करेंगे विथ सेम जेनेटिक मटेरियल। ओके, देन a characteristic feature of all cell is their ability to divide and form new cells। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे सेल्स के वो यही है कि एक नए पुराने सेल से एक नए सेल को बिल्ड करना, पुराने सेल से नए सेल को बिल्ड करना। ओके, देन what is cell respirations? What is cellular respirations? Okay, the cellular respirations refers to the process through which energy is released by the mitochondria of all cells। Means जो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन है, इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच एनर्जी रिलीज फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया। जो हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन से जो माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। ओके, एंड द ग्लूकोज दैट वी form our food is absorbed by the cell and utilized to produce energy। जो हम ग्लूकोज लेते हैं अपने फूड के थ्रू वो हमारी जो सेलुलर रेस्पिरेशंस है उसको ऑब्जर्व करता है, उसको यूटिलाइज करता है हमारे एनर्जीज को क्रिएट करने में, और जिस एनर्जी से हम काम करते हैं वो हमारे सेलुलर रेस्पिरेशंस के थ्रू मिलती है। ओके, in turn the body reserve energy in a form of ATP, in a form of ATP। okay, okay, and what is exactly ATP? ATP stands for adenosine triphosphate। ATP stand for adenosine triphosphate। okay, what are the two different types of cell based on their numbers? Okay, so on their numbers what are the two different cells? So the two different cells are unicellular and multicellular। okay, then cell are diverse in nature। जो सेल होते हैं बहुत डाइवर्स होते हैं नेचर में, बहुत डिफरेंट होते हैं नेचर्स में। every cells have different natures। okay, it means that are numerous types of cells within our universe। हमारे यूनिवर्स पे बहुत अलग टाइप के, बहुत अलग नंबर्स में बहुत सारे सेल्स हैं। ओके, द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ लिविंग सेल्स फाउंड इज एंड आर unicellular and multicellular। as I before mentioned this,
So what is unicellular and what is multi? Unicellular organism, uni means one, cellular means cells. These are the organisms that are made up of only a single cells. Unicellular matlab a single cell organism. Okay, the most of these organisms are made up of the prokaryotic cells. Means unicellular organisms are prokaryotic cells. Then cells that do not have numbers, brand organisms are true cells. For example, the most microorganisms like bacteria are made up of the single cells. Okay, and what is the multicellular organism? Multicellular organisms are most over the more than one cell organisms, one or two cells organism. Okay, it's a well structured categories of organism. Okay, so multicellular organism are advanced and well structured categories of organisms. Okay, the cell in a multicellular organisms show better structures and shape as compared to unicellular. मतलब जो multicellular organisms हैं that have a better shape structures as compared to the unicellular organism. Unicellular, a single cells doesn't have any shape, doesn't have any structures, but a multicellular have shape as well as the structures. These multicellular organisms are made up of eukaryotic cells. जो multicellular organism होते हैं, it's also eukaryotic cells. The cells which have membrane bounds organisms and numbers with a nuclear membrane. Means a multicellular organisms have membrane bound and nucleus with nuclear membrane. Okay, so the next is what are the two main types of cells based on their structural organizations. अभी हमने ये पढ़ा कि बेस्ड ऑन द नंबर्स, बेस्ड ऑन द नंबर कितने टाइप है हमारे पास, दो, एक यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. एंड अभी हम ये पढ़ेंगे कि बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसके स्ट्रक्चर्स पे कितने टाइप है. ओके, सो ऑन देयर स्ट्रक्चर्स इट्स ऑल्सो ऑफ टू टाइप. इट्स ऑफ प्रोक्रियोटिक एंड द सेकेंड वन इज यूक्रियोटिक. उसके स्ट्रक्चर्स पे भी दो टाइप के सेल्स हैं, एक है प्रोक्रियोटिक, एक है यूक्रियोटिक. ओके, द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंस इनसाइड द सेल एंड देयर अरेंजमेंट्स. जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हम ये देखेंगे कि उसके इनसाइड का स्ट्रक्चर और उनकी अरेंजमेंट्स के बिहाफ पे हम कैसे कैटेगरी किया है. हमने दो कैटेगरीज किया है, एक प्रोक्रियोटिक और एक यूक्रियोटिक. ओके, सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द प्रोक्रियोटिक. What is prokaryotic? Okay, these types of cell like membrane bound organisms like mitochondria, chloroplasts, Golgi bodies and other. Apart from this, their nucleus inside the prokaryotic cell does not have a nuclear membrane. Means जो हमारे प्रोक्रियोटिक सेल्स हैं उनमें हमारा क्या क्या चीज़ें लैक होती हैं, मतलब नहीं होती है. उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, गोल्गी बॉडी नहीं होती है, और भी चीज़ें नहीं होती हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, द न्यूक्लियस इनसाइड द प्रोक्रियोटिक सेल डज नॉट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसके अलावा जो हमारा प्रोक्रियोटिक सेल का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है. न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है. ओके, which means that all the genetic material of the nucleus remains spread throughout the cytoplasm. मतलब जो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस स्प्रेड करता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के थ्रू हमारा न्यूक्लियस स्प्रेड होता है, बिकॉज उसमें न्यूक्लियर तो होता ही नहीं है. ओके, एंड व्हाट इज यूक्रियोटिक सेल्स? These cells contain the most defined structures. मतलब जो हमारे यूक्रियोटिक सेल्स होते हैं, these are the most defined structures. Most defined मतलब in prokaryotic we don't have any particular shape, size or structures, but in eukaryotic cells the shape and the structures was defined. मतलब it shows.
They have membrane bound organism and defined nuclear membrane. It has membrane bound as well as defined nuclear membrane. Okay. Eukaryotic cells are considered to be advanced and more spatificated and prokaryotic cells. मतलब जो हमारे यूक्रियोटिक सेल्स है वो प्रोक्रियोटिक से बहुत एडवांस स्पॉटिफिकेटेड माना जाता है, बहुत एडवांस, एंड उसके जो शेप साइज है बहुत पर्टिकुलर माने जाते हैं. ओके, और होते भी हैं. So what are the cell organism inside a cell? What are the cell organism inside a cell? These are several cell organisms found inside the cytoplasm of a cell. Each cell's organism look and perform in a different manner. मतलब जो भी हमारे cell organism है, it's look like different, it's perform different functions. Okay, below are the list of the different cells organism, their specific functions. ये कुछ हमारी जो सेल हैं उनके सेल ऑर्गेनिज्म है, डिफाइंड है और उनके फंक्शंस है. फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Okay, so plasma membrane. The cell membrane are plasma membrane. Cell membrane and plasma membrane both are of same name. It is defined as the outermost covering of the cell. Means the cell membrane or a plasma membrane is a outermost covering of the cells. Okay, the structures provide shape to the cell and protect to the all the cell organism present inside it. जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो सबसे आउटर पार्ट है और वो हमारे सेल के अंदर की सारी चीज़ें जो होती हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है. कौन? सेल मेम्ब्रेन. इट्स प्रोटेक्ट ऑल द सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इनसाइड इट. ओके, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली परमिट्स certain types of substances through it. It hints at a selective permeability of the cell membrane. मीन्स जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत ही कम और सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को परमिट करता है अपने अंदर जाने देने के लिए या फिर अंदर बाहर जाने के लिए. ओके, एंड इट्स हिंट अ सेलेक्टिव permeability of a cell membrane. Selective permeability of the cell membrane. Okay. In next video we discuss about the diffusions and the other remaining part of this chapters. Okay, thank you so much.